हेलो एवरीवन। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए जो स्पेशल बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए है यूट्यूब पर, उसका ये नेक्स्ट डिक्टेशन है। आप लोग इस डिक्टेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लिखिए। उसके डिक्टेशन ख़त्म होने के बाद आप लोगों के लिए एक दो और भी गुड न्यूज़ है जो कि बोल रहा हूँ। अभी इसको अच्छे से लिखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। This revision petition is directed against the judgment dated 19th November 1994 passed by learned Additional District and Sessions Judge, Allahabad in criminal appeal, whereby the learned appellate court dismissed the appeal filed by the petitioner and upheld the judgment of conviction and order of sentence dated 13th July 1994 passed by the learned Chief Judicial Magistrate, Allahabad. By the said judgment, the learned trial court convicted the accused petitioner under sections 279, 304 IPC and sentenced him for the offence under section 279 IPC to undergo simple imprisonment for 2 months and to pay a fine of 500 rupees and in default of payment of fine further to undergo simple imprisonment for 15 days and for the offence under section 304 IPC, the accused petitioner was sentenced to undergo rigorous imprisonment for 1 year and to pay a fine of 5,000 rupees and in default of payment of fine further to undergo rigorous imprisonment for 6 months. Aggrieved by the judgment of conviction and order of sentence passed by the learned trial court, the petitioner has preferred this revision petition. The learned counsel for the petitioner contended that the learned trial court convicted the petitioner for the offence under sections 279, 304 IPC on the basis of the statements of the witnesses, and the learned trial court has erred in appreciating the evidence of all the witnesses because P.W.2 in her cross-examination admitted the fact that after the accident, when she heard about death of Akhilesh, she reached the place of the incident. Further, P.W.5 has been declared hostile witness by the prosecution and he did not support the prosecution story, and P.W.8 also admitted in her cross-examination that after the accident she came out of her house. Therefore, the evidence of these 3 witnesses was not properly appreciated by the learned trial court as well as by the learned appellate court, and regarding the evidence of P.W.1, the learned counsel for the petitioner contended that he also admitted in his cross-examination that after hearing the sound of the accident, he immediately rushed to the place of the incident, and further he admitted in his cross-examination that the deceased girl herself came under the minibus and thereby the accident took place. Thus, the learned counsel for the petitioner submits
that the evidence of P.W.1 also does not support the prosecution story that he saw the accident with his own. अभी ये डिक्टेशन आप लोगों ने लिख लिया है। अभी इस डिक्टेशन के जो आउटलाइन्स है उसको आप लोग अच्छे से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, रिव्यू कीजिए, और जहाँ जहाँ आप लोगों को लगेगा कि ये डिक्टेशन का जो ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन आपको ठीक ठाक से आप लोग नहीं बना पाए तो उसको गोल कीजिए और रख दीजिए। देन आप लोग जो जो ठीक ठाक लिखे उसको आप लोग टाइप करने के लिए शुरू कर दीजिए। जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा और जो जो आप लोगों ने गोल गोल किया है तो उसको मतलब छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब डिक्टेशन लिखने शुरू कर देंगे तब अगर एक डिक्टेशन खराब आया है तो उस डिक्टेशन के लिए आप लोग अगर सोचते रह जाएंगे तो टाइम भी अपने आप ही चला जाएगा। तो उस डिक्टेशन को आप रहने दीजिए और अच्छे से ट्रांसक्राइब कीजिए। पूरा ट्रांसक्राइब करने के बाद भी आपका जो जो गलत हुआ उसका, अभी इंग्लिश में जो जो गलत हुआ, क्या क्या पंक्चुएशन मिस्टेक आया, क्या क्या आपका स्पेलिंग मिस्टेक आया, क्या क्या आपका एक्स्ट्रा वर्ड आपने लिख दिए, सब कुछ अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ये सब कुछ आप लोग हमारे स्टेनो सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, वहाँ पर सेम सब कुछ मिलते हैं। तो आप लोग वहाँ पर भी ऐसे करके कर सकते हैं, नहीं तो आपके हिसाब से आप कर लीजिए, लेकिन ये सेम ऐसे ही प्रोसेस आप लोग फॉलो कीजिए तो आपका ज़रूर इम्प्रूव होगा। और देन जो जो मिस्टेक हुआ, जो जो आप लोगों ने देखा कि ये गलत हुआ, उसको फिर से रिपीट कीजिए, उसको अच्छे से फिर दोबारा लिखिए, फिर नेक्स्ट आप डिक्टेशन सुनिए और अच्छे से लिखिए। ऐसा करके प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपका इम्प्रूव होगा। और इसके साथ आप लोग डेली हमारे साथ जो लाइव डिक्टेशन है वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा ज्वाइन होना पड़ेगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है, सॉफ्टवेयर का भी लिंक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे आप लोग विजिट कीजिए और सॉफ्टवेयर और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप लोगों को डेली 6 बजे, आप लोगों को सुबह 6 बजे आप लोग क्लास कर सकते हैं। 6 AM to 7 AM लगभग हमारा क्लास होता है, जहाँ पर लीगल डिक्टेशन, मिक्स डिक्टेशन, जनरल डिक्टेशन वहाँ पर रहते हैं, और आउटलाइंस भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस की या क्लास की कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ते है। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ और भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यही हमारा मेन मोटिव है। तो और चैनल पर यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे तो हम लोगों को मोटिव भी मिल जाए कि हाँ, और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए भी हम लोगों को मोटिवेशन मिलते हैं। तो हो सकता है तो आप लोग अगर अच्छे लगे तो ये आप लोग लाइक कीजिएगा, बाकी कोई फोर्स नहीं है, आपका हिसाब आपका मर्जी से आप कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको अच्छे से एक नौकरी आप लोगों को लेना ही है, यही हम लोगों का सबका मोटिव है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।